A big thank you to our supporting partners, Grandiose Supermarket, Al Arab Tents, Al Qatar Contracting, Noble Metal Coating, Magnus Zenith, VTEL TV, NKN Media, Isma Entertainment, and Mobi Wents. Venue partner BurJuman, print partner Khaleej Times, magazine partner Magzoid Magazine, radio partner Vibe FM 105.4. And the event was brought to you by Fox Media and Entertainment. Why are we here today? That's my family. So please bear with me. But I usually always tell the guests that, thank you for making time for Timeout. Today, I want to tell all of you, thank you for giving us your gracious time and making time for Timeout. I welcome you all to the first of its kind in UAE live podcast, Timeout with Ankit. And we are starting it with a bang. Are we here to see Sohail and Arbaaz? Okay. I like that. Okay. So now let's get on stage the two gentlemen who are not only the brothers of the biggest megastar in India, but who are actors, producers, directors, businessmen themselves. And most of all, they're good beings, right? So let's get on stage, Sohail and Arbaaz Khan! Oh, who's that? Look out! All good. How is everyone? Good. We are so excited to be in front of you all. मजा आ रहा है. Very good. I don't recognize the mall like this. Welcome. I've been to this mall so many times. यहाँ इतनी बार आ चुका हूँ, लेकिन पहली बार इस एंगल से मॉल कुछ अलग ही लग रहा है. अरे कितने लोगों को बुलाया शादी में यार? बजट वाली शादी थी. यूजुअली ना तो मैं जब शुरू करता हूँ ना, अब ये चलता रहेगा. ये चलता रहेगा हिसाब. I'm deaf ear to that. Yeah. अच्छा सबको एक साथ हेलो. सबको एक साथ हेलो दुबई. अच्छा, तो first of all, thank you for making time for Timeout. Yeah, it's our pleasure. Seriously, we're really excited. It is always lovely seeing you guys. Usually ना जब मैं ये करता हूँ ना, this type of thing, I never prepare. मैं कभी आज तक मैंने नहीं किया. But आप लोग के लिए ना मैं पहली बारी questions लिख के आ रहा हूँ. अच्छा. पर मैं उससे पहले ना मेरे को एक चीज़ पूछनी है, just so that we are, मतलब कभी ऐसे पॉडकास्ट या इंटरव्यू में कभी ऐसा लगा है कि यार इसने ये सवाल कर दिया बाद में मिल? ऐसा कभी लगा है कि इसने ये सवाल कर दिया बेटा बाद में? यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते, यहाँ लाइव है. अच्छा, शुक्र है. नॉर्मल अगर स्टूडियो में आप भूल जाइए कि यहाँ कोई एडिट हो सके. यहाँ सिर्फ एक अपने सवाल जो है थोड़े संभल के. नहीं मेरे सवाल क्योंकि कहीं लाइक ही सेड ना कहीं और होता तो चलो हम बाद में बोल सकते थे कि ये पोर्शन एडिट कर देना, लेकिन यहाँ तो अभी सिर्फ हमको अपने आप को एडिट करना पड़ेगा. नहीं आपके सवालों का चुप जवाब ही नहीं. नहीं we'll 100% be very mindful. So just before any of this जब ये शुरू होने से पहले, a few I think months back you guys were on TV and I was telling my family members, I was telling them यार I wish जब मेरे बेटे बड़े हो ना, आप लोग की तरह हो. I swear, I'm not joking. I really told them with heartfelt, because when you're visible on the screen, like both of you together, or even all of you together, लगता है कि there's a genuine brotherhood and like there's genuine love there. So let me ask you, when you guys were growing up,
Now, obviously, I mean, there's Sohail bhai, there's Arbaaz bhai. You have two sisters as well, and there's someone else also, right? Okay. Who's he? No, that's lovely. Salman bhai is there. Now, when three of you were growing up together, you guys must be your hands full. कि मतलब आप लोग मेरे को लगते नहीं हो शराफत से बैठने वाले, you know? एक नॉर्मल चाइल्डहुड जैसा होता है, जैसे सारे बच्चे बड़े होते हैं, शरारत करते हैं, खेलते हैं, और हमारे बीच में मतलब बहुत कम गैप है उम्र का, तो हम दोस्तों की तरह ही बड़े हुए हैं. लाइक सलमान और मेरे में सब ऑलमोस्ट 2 साल से कम का गैप है. हाँ. मेरे में और सोहेल में 4 साल का गैप है. तो बट वो एक उम्र तक ये 4 साल का गैप ज़्यादा लगता है, हाँ. बट आफ्टर यू ग्रो अप then it's not so much. So we've had our share of, you know, लड़ना झगड़ना, ये मेरी चीज़ है, ये तुम्हारी चीज़ है, ये पहन के चला गया मेरा, वो पहन के चला गया मेरा. तो कई बार ऐसा होता था कि आपस में हम लोग जब लड़ते झगड़ते थे, तो अगर मैंने सलमान की टी शर्ट पहन ली तो मॉम को बोलते थे कि वो पहली टी शर्ट पहन के चला गया, उसको बुला लो. तो कभी वो मेरे जूते पहन के कहीं चला जाता तो मैं उसको बुला लेता था, मेरे जूते लेके आया वापस से. तो ये हमारे बीच में चलता रहता था. तो ये काफ़ी साल चला, बिकॉज हमारे साइजेस सेम थे, कुछ हमारे दोस्त सेम थे, तो ये सारा एक्चुअली हो गए, साइजेस सेम हो गए. और सब, और जब हम एक उम्र में आए, जब हम मैं तीनों भाई नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा हम चारों भाई एक साइज में आ गए. That includes my father Salim Khan. Yes, of course. Because he gives us more competition than anyone. And he's like a friend only, like a brother. He's a friend to us. There's a picture online where you guys are, of course, bare chested. There's Salim Saab also in it. Even he had abs. Yeah, I'll tell you. And our photographs were photoshopped. His wasn't. He had genuine abs. नहीं भाई, मतलब अरबाज भाई as handsome as you're looking, Sohail bhai, you are ripped. कैसे, मतलब what are you like? It looks like you're only working out, Sohail bhai. Like No, it's hard work. It's hard work. It's discipline, and it comes from my father. He's 88, and he never misses his walks. He walks every day of his life, through rain, sunshine. Okay. And so, you know, those are the good qualities that have kind of sprinkled on us. Then Salman bhai, who created the trend. So Arbaaz bhai used to play a lot of squash, swim for our school, college, for Gwalior. He was in Gwalior. So there was always a very sporting in our building where we stayed. We had a big playground. Okay. Our schools, our colleges were very declined to sporting events. So I genuinely believe that when you're into sports or any kind of Physical activity, gym time, you know, you work so hard to make yourself disciplined, so you automatically keep yourself away from your vices. Okay. And for us, our wives. Not anymore. You can talk. I am. So what dad has taught us actually is that sedentary lifestyle is probably worse than, you know, anything. Like even they say smoking, drinking से ज़्यादा खराब है sedentary lifestyle. मतलब जो आदमी सिगरेट नहीं पीता या शराब नहीं पीता या जो भी नहीं करता है, बुरी आदतें नहीं है, बट वो कोई मेहनत नहीं करता, कुर्सी पे ही बैठा रहता है. But a person who has these habits but is exercising, is eating well, is hydrating, he has a better chance of being healthy than a person who's not doing any of that. So my father said कि बेटा कुछ भी करो जिंदगी के अंदर 1 घंटा मिनिमम अपने शरीर को दो. True. He says he's 88, he doesn't miss a walk ever in his life. बारिश होगी, गर्मी होगी, सर्दी होगी, and mashallah he eats everything. You know, he doesn't diet. तो all these things are like, you know, नहीं तो आदमी को परहेज करना पड़ता है. तो अगर आप एक्सरसाइज करते हो, वो कोई भी फॉर्म में हो, चाहे वो वॉकिंग हो, योगा हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, जिम जाना हो, वो एक चीज़ उन्होंने हमको सिखाया कि बेटा ये आपके जो बाकी के 24 घंटे हैं ना, वो ये 1 घंटा संभालेगा. अच्छा. तो 1 घंटा अपनी बॉडी को चाहे किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में दो. एंड फॉर्चुनेटली दैट वी ऑल ब्रदर्स हैव इनकॉर्पोरेटेड. लाइक टुडे आई एम 56 years old. Yeah. So
So I mean to say, genetics do play a part. 100%. They do play a part, but it's not as though one has been like really taken care of कि ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, ये नहीं सब किया है, सब ठीक है ना? But like I said कि थोड़ा सा अपना ख्याल रखा है. Yeah, of course. You know, everything in moderation. सब चीज moderation. I've any time आप में से किसी की भी बात यहाँ इंटरव्यू या कुछ चल रहा होता है, there is always mention of the great Salim Saab, of course. He's your father, he's your mentor. But he's a big influence in your life. So अभी आप जो देखते हैं ना, जैसे कि हमारे भाइयों में देखो, I wouldn't say that, but कई बार ऐसा होता है कि बड़ी फैमिली में भी भाइयों में या फैमिलीज में बहुत मतलब एकजुटता नहीं रहती. They are not really together. But honestly, this is not a facade. We as a family are, you know, हम एक दूसरे की शायद खुशियों में इतना शामिल ना हो. You know, like कि ठीक है तू अपना कर रहा है सब कुछ है, because we all have our own lives, you know. Of course. But whenever there's a crisis, whenever there's anybody who needs somebody in any way, whether it's an emotional need or a financial need or a psychological need, we as a family come together. And that is more important, and that support is more important than anything else. And that is the biggest, बोलते हैं श्रेय जिसको जाता है वो मेरे फादर को, कि उन्होंने हम सबको ना रखा एक साथ. He says कि be together. And that, inshallah, will be continued in our generation with our families as well. Yes. Like his kids, my kid, my sister's kids, that keeping that bond together, you all have to be for each other. True. You know? Don't interfere in each other's lives, but be there for each other when you're needed. When you're needed. वो दिख जाता है हमारे फैमिली में, टच वुड दिख जाता है. And if we can set an example for, like Indian families are very, you know, like जुड़े हुए रहते हैं. Yeah. तो वो एक इंस्पिरेशन अगर हमसे आता है किसी को, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग. हम सुनते हैं ऐसा कि लोग बोलते हैं यार आप लोगों को भाइयों को साथ देख के, फैमिली को साथ देख के, वी फील वेरी गुड. एंड दैट इज व्हाट our families achieve, which is that's our greatest success. It's phenomenal. More than anything else, that's our greatest success. It's phenomenal, you know. But can I ask you a personal question? This is something that even I want to know. You know, father-son relationship ना थोड़ा एक like, you know, like during the day even with my father, like हाँ जी okay done, हाँ जी अपा ठीक है done. फिर हफ्ते में 2 दिन आते हैं, एक certain टाइप के बाद हम लोग सेम फ्रीक्वेंसी में रहते हैं. फिर मैं बोलता हूँ डैड आई लव यू यार, यू नो, एक वो हमेशा रहता है राइट कि यू हैव दैट थिंग विद हाँ जी ओके हाँ ओके हाँ जी ओके ओके, उससे ज़्यादा बात नहीं होती है फिर, यू नो. See, So how's that with you? हमारे फादर के साथ, I'll just elaborate on that. See, when we were growing up, my father was that typical father के भाई, you know, mother would give the affection and mother would give the hugs. हमारे father से हमको occasionally hug मिलना was a very big thing. कोई चीज़ के ऊपर तारीफ करना या बोलना कि I love you was like a very big thing. Today I don't miss a day to tell my son I love him, Okay. to hug him. You know, even if he doesn't want it, I'll pull him and I'll hug him. And even if he doesn't want to hear it, I'll shout across the room, "Wait, I love you," and he'd say, "Why are you saying it in front of my friends?" So maybe as a child, but it's not as though your parents didn't love you. It's just that they had a very different way of expressing it. Yeah. Today, my father sits with us, holds us, hugs us, tells us. So we never felt any less. But I realized कि हर आदमी का एक अलग तरीका होता है प्यार या इमोशन दिखाने का. Of course. तो फादर के साथ ये होता था, लेकिन द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव दैट ही गेव and the support he gave was unbelievable. Today, like I said, wherever we are and the kind of love and appreciation and izzat jo humko milti hai, there is no denying that it has come from the fact that it is his blessings and his guidance in our lives. No, of course, 100%. As a big You must have come in a situation in your life where probably you wanted your father's guidance or advice on something, and you all must have differed. right, sure. आपको घर खरीदना था, say at somewhere in Dubai, which is a posh area, and he must have said that no, buy it somewhere else. Okay. Some years later, one of you all must have been proven right. Yeah. But at that time, you could never ever. The decision could be wrong, but the intention could have never been wrong. No, true. So where your parents are concerned, where your siblings are concerned, your loved ones are concerned, I don't think that they would ever want anything, the intent to be wrong. Yeah. Intentions can be wrong. The decisions can be wrong, and your decisions can,
they can change. They keep on changing, and especially according to the world today. Yeah. But the intentions are never wrong. Yeah, And of if your course. intentions are not wrong, and we never take up, whatever you feel about us and you see about us, some people feel it's very easy. It's not very easy. In fact, the closer you are, the more emotionally attached you are, the more sensitive you are, and you have to take care. You cannot take your own people for granted. Yeah. That sometimes it's an inner feeling where we say that, like, he's my brother and I'm so close to him. This is one thing he should have just understood. No, that's one thing he probably must have not have understood, and I had to kind of explain it to him, and it's created a doubt in his mind. So what we do in our family, what we have been taught is clarity. Have a lot of clarity. Have a lot of conversations. If you feel that there is something bothering even your son, don't consider that he's my son. He's my blood. He should understand. Okay, this is my upbringing. No, we are three brothers. Yeah. And we three, we don't look alike. We don't behave alike. We have different kind of friends. Yeah. We've been brought up differently. So, in one upbringing, we are three different individuals. people, Yeah, of course. So I believe in one thing that, in fact, sometimes a friend gets closer to you than your own sibling. That was explained to our dad that don't keep anything in you. You have something to say, Speak it out. speak it out, communicate, because that's the only way. Otherwise, you start You're dreaming boiling dragons. it up. Yeah, you I start know what dreaming you mean. dragons. I understand. You, I'm assuming, must be the most pampered. No. Arpita. Of course, youngest, no doubt. But when it comes to the three of you, सबसे यार parents are, especially dads, थोड़े strict होते हैं, right? And आप तीनों, like I said, कि कोई सीधा बैठने वाला मुझे लग नहीं रहा, और vibe नहीं आ रही मेरे को. सबसे ज़्यादा डांट किसने सबसे ज़्यादा खाई है आप तीनों ने? आई थिंक सलमान ने सबसे ज्यादा Serious? फॉर श्योर दोनों से हम थोड़े बच गए थे उस मामले में. आई थिंक थोड़ा सा बिकॉज ही वाज एल्डर तो शरारती भी थे, तो डैड से थोड़ा डांट वाट हल्की फुल्की मार भी खाई है. बट हम थोड़ा बच गए. बट या आई थिंक अच्छा. सलमान वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ brat when he was growing up, Okay. and yeah. Okay, very nice. So you're not going to tell me stories. तो डैड का कुछ ऐसा था कि जैसे कि सलमान का एक किस्सा हमको याद है कि डैड took him to see some circus and उसने कुछ ट्रपीज के कुछ एक्ट्स देखे, एंड जब वापस से जब आए तो कहीं बिल्डिंग के अंदर एक रॉड लगा हुआ था. हमारे जो सोसाइटी के जो टॉयलेट बना था, जो जहाँ पर वॉचमैन वगैरह सब जाते थे, तो वहाँ पर एक बार लगा हुआ था. तो चुपके से ही वेंट एंड ही ट्राई टू डू सम स्टंट्स ओवर देयर, और वो करने में वो गिर गया, उसका हाथ टूट गया. तो इंस्टेड ऑफ माई एंड ही केम टू शो हिज टू डैड के देखो मेरे साथ क्या हुआ. तो इंस्टेड ऑफ लाइक ही थॉट कि सिंपैथी मिलेगा, उनको 2 झापड़ मिले. क्या जरूरत थी ये सब करने की, पागल हो गया क्या तू. चलो इसको लेके जाओ डॉक्टर के पास. He never got. So my father had a very different way of express. के बाद ये तो बेवकूफ़ी है, ये तो करने की जरूरत नहीं है. No sympathy towards something that is a stupid act. You shouldn't have done it. No, because that I way. think as a father, my he was very concerned regarding Salman Bhai, because Bhai thought nothing was impossible. Nothing for him. He didn't look at anything as if it couldn't be done. If you could think about it, if it's there in the head, if you can think about it, you can probably figure it out and manage it. So that was His something approach. that my mom तस्वीर लेके हमेशा that ये बेटा क्या कर देगा ये When we were growing up, like you said, कि सलमान तो at the age of 24, 25 became a superstar. Yeah. But ये उस उम्र तक हम भी तो ग्रो अप हो रहे थे. Of course. तो सबसे ज्यादा फियर सलमान का होता था कि बेचारे ये क्या करेगा. ये तो पढ़ लिख रहे हैं, अच्छा खासा कर रहे हैं, और देखो दुनिया कैसी है, कौन कहाँ निकल गया. So it's destiny plays a big Yeah. part, and Salman is definitely very, very focused, like he said, and very hardworking, and genuinely believes that nothing that he has put his mind to he cannot do. कोई भी चीज he would pick up, like skating he would pick up, cycling he would pick up, would fall 1,000 times. gymnastics, cricket, anything. Never give up.
थोड़ा सा time spend करके he would master it almost. That quality is there in him, you know. Like he would pick up anything that he wanted to do, like skateboarding or anything, roller skating, and he would become very good at it very fast. Fortunately, our children have that. My son has that. My son will pick up the guitar and like within a matter of like couple of months learn how to play it. He was very good with card tricks, my son. Okay, So very these talents that are, I think, inborn in people. Sure. Like I think somebody like me has to work very hard at becoming good at something. Okay. You know, if I decide that this is something I like, there's a lot of effort put at wanting to become good at it. But some people have that natural knack. So that Salman has that. You know, anything he picks up, he can become good at it very fast. Yeah, that's true. You know, some people actually have that. Yeah. But I'm sure perfection करने के लिए भी बहुत effort जाता होगा, no doubt. तो जब आप लोग बड़े हो रहे थे, like you said, there's not much gap in all three of you. जब बड़े हो रहे थे, ambitions थे, मतलब कुछ बनना था, जो जैसे, you know, every kid goes through that phase, right? I wanna try this and, you know, maybe become this, or try this and become this. मेरे father ने तो Or was it clear कि मेरे father ने but very honestly, our fathers expected us to, our parents expected us to be average students, pass हो जाओ, कुछ काम वाम पे लग जाओ. God has been kind, you know. Whatever we have achieved in life, we genuinely feel that we've been blessed. We've got more than what we deserve, and it's just that there's a lot of because my father came from the same profession. exactly. You know, he guided us. But I think more than the guidance, the prayers that we got from our mother, Okay. you know, that really helped us. She used to 24/7. She used to just be praying for us, for our well-being, for our safety, because we were three brothers nearing an age where all the clothes would start fitting us, and Yes. the sizes are all sizes will be equal. We had two sisters to protect. Of course. So I'll tell you something very recently. I went to my dad for an advice, and there's something bothering me, and mashallah, he's 88, a wise man. So it was something personal, and I went up to him. I told him, I said, Dad, this is a problem. Can you help me out with this concern? And he looked at me and he told me, he says, Beta, ye cheez mujhse mat pucho. I might just give you the wrong advice. I'm not equipped to give you the right advice on this. And that was beautiful. He's You know, because here you have everyone giving free fund advice, you know, even when it's not needed. And he says, I'm not qualified to give you advice on this. You know, take a professional's advice because I'll be biased. And that is when I realized, you know, that we have lived under a wise man's shelter. So and he's right, you know. See, I'll just elaborate on it. कि everybody thinks that their father is a hero, right? आप एक बच्चे से कभी भी देखोगे तो उसका बाप उसको सुपर ह्यूमन लगता है. वो कभी कोई चीज़ गलत नहीं कर सकता, उसको हर चीज़ की नॉलेज है, सब कुछ. बट वो रियलिटी में ऐसा होता नहीं है. ऐसा there are weaknesses in your own father. There are things that you know that they were not. That he himself knows that, and that is what my father once told us. He says, बेटा मैं आपका बाप ज़रूर हूँ, मेरे में कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, मेरे में भी कुछ ऐसी खामियां हैं कि मुझे गुस्सा आता है, मैं इरिटेट होता हूँ, या मैं थोड़ा इस मामले में ऐसा हूँ या उस मामले में वैसा हूँ. मगर तुम मुझे देख के इंस्पायर होते हो तो मेरे अच्छे क्वालिटीज़ पे ध्यान दो. मेरे वो क्वालिटीज़ पे मत, वो डोंट गो ऑन दोज क्वालिटीज़ व्हिच आई डोंट हैव. He says, because I may be your father, but that does not necessarily mean that everything about me is right. And that's what I realized, and I told my son the same thing. I said, see, I am a father, you know, but I've got 50,000 things I'm still working at. Sure, So yeah. don't turn around and think, oh, my father should have known this or he's good at that. I said, what do you like about your father? Try to incorporate those qualities. And that is exactly how you should treat. Because like he said, if my father didn't know, हमको लगता है कि हमारे बाप के पास सारे solutions है. कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है. एंड इसमें कोई बुराई नहीं है बोलने के लिए कि बेटा मुझे नहीं मालूम है ये. I don't know this. You might need to ask somebody else, or you need to take a professional advice. advice, yeah. And that itself is parenting. Parenting is not knowing everything and doing everything for your child. Right. Parenting is guiding them to know which is the way to go.
So that's very important. That's very well said. Yeah. But there is one thing that beats my mother to my father. That my father might run out of advisors, but my mother's kitchen never runs out of food. I've heard this, this I've heard that. We have a very small kitchen, and since we remember, our school friends, then our college friends, my dad's friends. हाँ, एक कमाल का किस्सा ये खत्म करने में सुना था. We have around we lay the table 3 times a day for breakfast, lunch, and dinner. Yeah. And there was a time that we weren't doing very well. Yeah. But we never felt it because our needs were very basic. Yeah. What we just needed good company, which we all had. We had 3 brothers to play with. Yeah. Our 2 sisters. We had friends in the compound. Never missed anything. Yeah, all these gadgets about the iPads and iPhones have just come. We used to play with normal toys, bat ball, which weren't very expensive. And what we used to get was good food. Good food and good company. तो खाने का ऐसा है हमारे घर में कि लाइक यू सेड कि वो आई थिंक बरकत ही है कि कोई भी आए एंड ही कैन कम फॉर सम वर्क ओनली, बट उसको हमेशा इनवाइट किया जाएगा खाने के लिए टेबल पे. अच्छा. तो कोई जैसे कोई कुरियर वाला भी आ गया सिर्फ वो खाने के टाइम पे आ गया और कुछ दे रहा है तो उससे पूछेंगे खाना खाया क्या, वुड यू लाइक टू ईट. नील से नहीं, मैं खा के आया हूँ जो भी है, बट उसको पूछा तो जरूर जाएगा कि भाई खाना खा लो और या टेबल लगी हुई है तो भी इनवाइट. फादर एक कहावत बोलते हैं कि मेहमान अपनी किस्मत का खाना आपके घर आके खाता है और आप पे एहसान करता है. तो इसे ये जो परंपरा है ना हमारे घर की, जो खाने पीने पे कभी किसी को रुकावट मत करो. That's the only thing that he has told all of us. That to keep that going. हाँ, इसे के खाने पीने पे कभी किसी को रुकावट मत करो कि ये नहीं खा सकते, इनके लिए अलग. हमारे यहाँ अलग खाना नहीं बनता है हमारे स्टाफ के लिए. For our drivers, for our staff, for us. जो हम खाते हैं वो वही सेम चीज़ उनके लिए बनती है. लाइक देयर इज नथिंग के अलग. वो पहले से एक अच्छा किस्सा सुनाता हूँ मेरे फादर का. जब माई फादर वाज स्ट्रगलिंग तो मॉम को मालूम था कि अगर कहीं बाहर चले गए और रेस्टोरेंट बंद है, अगर दोस्तों के साथ है तो डैड बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलेंगे चलो घर चलते, मेरे घर पे खाना होगा. ठीक है. अब वो मेरी मदर ना उस चक्कर में कभी कभी थोड़ा सा खाना हमेशा रखती थी घर के अंदर कि पता नहीं मियाँ कभी भी आएंगे और बोलेंगे कि अरे मेरे दोस्तों को मैं ला रहा हूँ और खाना लगा दो. और उस वक्त तो लैंडलाइंस होते थे, कभी इन्फॉर्म भी नहीं होता था. तो ऐसे ही किसी एक दोस्त को डैड घर पे ले आए. ठीक है, शेख साहब करके उनका नाम था. और वो आए तो जैसे ही मॉम ने देखा अरे यार ये तो अभी किसी को ले आए हैं घर पे रात को 1 बजे. डैड ने बोला यार खाना वाना लगा दो जो भी है. चीज़ें हाँ ठीक है, थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा है, एक ही आदमी लाया मैं लगा देती हूँ. तो खाना लगाया, खाना बड़ा लजीज था. वो जिन्होंने शेख साहब आए उन्होंने थोड़ा खाना मज़े से खाया और बोला यार खाना इतना अच्छा है, चला भूख और लग रही है. तो मॉम ने बोला कि ठीक है. डैड ने बोला कुछ करो, जैसे कोई अंडे वंडे है, मैं अंडे वंडे बना देती हूँ, भुर्जी उर्जी बना देती हूँ, उनको खिला देती हूँ. तो कोई 8-10 अंडे की भुर्जी उर्जी बना के वो रख दिया टेबल पे, ब्रेड रख दिया. अब वो भी खा गए. उसके बाद थोड़ा सा कुछ और बचा हुआ था, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह बचे थे तो वो खिलाए, वो भी खा गए. तो उनको अभी भी भूख लग रही है. तो डैड ने बोला इधर आओ, एक मिनट मेरे साथ इधर आओ. एक कमरे में लेके गए जहाँ पे सलमान और मैं सो रहे थे. बोले ये मेरे बच्चे, इनके ऊपर काली मिरी नमक डाल के इनको भी खा जाओ. साले तुम साला बंद ही नहीं कर रहा खाना खाना. So my father's humor was like this. That was a good one. That was a very good one. So Salim Saab, the great Salim Saab he was already a made in the industry. Like I have heard the combination of Salim Javed got paid more than the actors at that Yeah, point they came to a stage where they were getting paid more than the actors in the film. itself. But see, commercialism is all about what value you bring. ठीक बात. If you're delivering, you will get that value. Of course. And that is what they fought for. उनका अभी एक डॉक्यूमेंट्री आने वाला है. Okay. We all must watch it. A brilliant documentary on Salim Javed is coming, which is called The Angry Young Man. Okay. So it kind of Of tells course, you it about is, their graph of how they started, what they did, Yeah. their highs, their lows, their split, everything. So they fought for their name. Writers को कोई नाम मतलब नहीं पोस्टर होता पे भी नहीं डालता था और उनको मतलब क्रेडिट भी नहीं देता था, चाहे कितनी भी अच्छी स्टोरी हो.
और बेस किसी भी फिल्म की स्टोरी होती है, तो दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर द बिलिंग एंड द क्रेडिट एंड द मनीज बिकॉज दे वर वेरी मीगरली पेड एंड बट दे डिलीवर्ड. उसके बाद भी मतलब आई डोंट सी दैट काइंड ऑफ नेम और consistency जो Salim Javed as writers brought. It has not come since then. You're absolutely right on that. But no, what I wanted to ask was, so he was already he'd already made it in the industry. So when you guys were growing up, you still had full fledged access to the industry. तो childhood कैसा था? मतलब ऐसा था कि मतलब बाबा उठ के जूस लाओ या कैसा था आप लोग का? So it wasn't that simple. ठीक है, like I said कि कुछ दरवाजे ज़रूर खुलते हैं अगर आपके फादर किसी प्रोफेशन में हैं, अगर आपके फादर मेडिकल में हैं या आपके फादर से लॉयर है, तो आपको थोड़ा सा एक्सेस दूसरे लॉयर्स से, बिकॉज उन तो एक्टर्स इस फैमिली में रह के ये था कि अगर हमको किसी से मिलना हो तो थोड़ा सा ईजी था कि भाई मिल सकते हैं, बट उसकी वजह से काम मिलना वो ज़रूरी नहीं है. लाइक लोगों को लगता है कि आपको अगर क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं तो आपको काम मिलेगा और आप इजीली करियर बन जाएगा. करियर जो है वो 25 साल का होता है. आपको एक ब्रेक शायद मिल भी जाए, लेकिन आपको अगर आज हम दोनों आज वी आर स्टिल हियर, ठीक है, वी हैव नॉट अचीव द सक्सेस लाइक पर से ऑफ द सुपरस्टार्स और फॉर लाइक अ ब्रदर, बट वी आर वर्किंग, वी आर डूइंग अदर थिंग्स, वी आर बिजी डूइंग ऑल थिंग्स. कोई किसी के ऊपर फेवर नहीं करता, क्योंकि इफ दे डोंट वांट यू, आप किसी के बेटे हो, भाई हो, कजन हो, कोई भी हो, किसी को इंटरेस्ट नहीं, बिकॉज इट्स अ कमर्शियल थिंग. तो इट्स वेरी अनफेयर टू से कि कोई चल रहा है तो इसकी वजह से चल रहा है, क्योंकि वो आदमी जो वो कभी कभी खुद की नहीं चला सकता, वो आपकी क्या चलाएगा. एक टाइम ऐसा आता है एक सुपरस्टार का, जब उसकी 10 फिल्में फ्लॉप होती है तो वो अपना खुद का कुछ नहीं कर पाता, वो आपका क्या करेगा. इट्स ऑल अबाउट everybody is on their own after some time. Everybody flies, some here, but they're all on their own. So that's what it is. So it's very unfair sometimes, which I don't want to get into that debate where people say, oh, आप इंडस्ट्री के हो, oh, आप किसी के बेटे हो, oh, आप किसी के not. It's absurd. With every example of somebody who's made it as somebody's son and somebody's brother, there are hundreds of examples of those sons and those brothers who have not made it in the industry. So there are enough examples. Now, do we need to state those? कि उसका क्या हुआ और उसका क्या हुआ, तो it's very unfair when that whole topic starts कि अच्छा easy, ऐसा नहीं है. Of course not. No, not at all required. But you guys still have made your presence and you've achieved what you have, which is wonderful to that. I mean, kudos to you guys. Abhi now you both have two very handsome young men at home, both grown up. So when are we seeing them join? I think they both are like grooming themselves right now. Yeah. The training now, Nirvan has just finished his course from UCLA. Another 2-3 years, probably director of his choice, he will assist in Bombay. Then train for a year or so, particularly in some emotion. And fortunately, the platform that we come from, the platform that we have, and the family credit name, should get a job. Of course, I'm sure. Get a job, but he has to fend his own job. See, the thing is not necessarily about the first break. If it's a career, you're talking about a long 15-20 year of your something that you want to choose as a profession and your livelihood, something that will put food on the table, that will buy you a house, that will buy you a car, that will take care of your family. So it's not easy. कि एक पिक्चर चलने के बाद जरूरी नहीं कि आपकी दूसरी पिक्चर चले आपका करियर हो. करियर आपका 20 साल चलने पे बनता है. So with that, so you have to have that focus and that dedication and the patience, because you will meet failure. It's bound to happen, whether it's through your expectations or through what world conceives as what is not successful. You will have to face that, and uske liye you have to get ready, and that fortunately is what we bring to the table, that our fathers have done it. कि बेटा लगे रहो, काम करते रहो. कौन सी पिक्चर शोले बनेगी, कौन सी पिक्चर दबंग बनेगी, आपको पता नहीं है. जब हम बना रहे थे वो फिल्म, हमको नहीं पता. प्यार के तो डरना क्या, हम तो मस्ती मजाक में बना रहे थे. आज की डेट में वो पिक्चर आइकॉनिक है, क्लासिक है, उसके गाने हिट हैं. हमको नहीं पता था, हमको सिर्फ काम करना था, वो मेहनत करनी थी. वो दुनिया ने बना दिया उसको. तो
आप प्लान करके ग्रेट नहीं बना सकते. आप काम करो वो ग्रेट बन जाएगा बाय डिफॉल्ट. Okay, आप अपना काम अच्छे Yeah, से so when करो, people think now that, oh, I have to wait for a great script, oh, I have to wait for a great role, how do you know whether that a role that you do is going to get great or not? Now, take for instance, I'm just saying a recent example of Bobby Deol, a 15-minute role in a Exactly. 3.5-hour film, and he's pretty much got as much recognition as the lead actor in the film. Absolutely. Did he even conceive it? Did he even think about it? But उसने किया ना, वो मिला उसको. वो कितने सालों से लगा हुआ था. What was that? Ashram में he got done. He's a dear friend of both of us, and we are very happy for him. But you have to keep at it. लगे रहो. वो कब कोई magical picture, कब कोई magical role हो, you don't know, and that will set you again. No, I'm sure they'll have But their you own can't path. wait for it ना. अभी he didn't wait कि मेरे को ये मिलेगा तो मैं करूँगा. हाँ. यार ये साल करते तो रहो. all the deals आप are- करते रहो. अभी मेरे को नहीं ये पिक्चर आएगी, वो रोल आएगा तभी मैं करूँगा. करो. अपने आप चीजें will fall into place. अच्छा एक दो क्वेश्चन और अभी एक बार बताओ, जब दबंग आपने बनाई थी, जब आप शुरू कर रहे हो, अभी नाउ फॉर एवरीवन सिटिंग हियर सलमान खान इज सलमान खान. फॉर यू ऑन सेट ही इज योर ब्रदर. No, नो not कभी on ऐसा हो set. रहा है कि एक्टर He's लेट आ रहा है? he's my brother when we are not on set. हाँ. On set, he gets the respect of a superstar. हाँ, that's what I wanted to ask. So He how? gets the respect of what somebody else on his set. He should not feel कि घर की मुर्गी दाल बराबर. ये मैं seriously बोल रहा हूँ. हमको इनफैक्ट और केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि he'll think यार क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ तुम मेरे साथ ऐसे हो. हाँ. क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ तुम मेरे को जल्दी बुला लेते हो, तुम मेरे से ज्यादा काम करा लेते हो. तो हमको इनफैक्ट और ख्याल रखना पड़ता है. You understand what I'm trying to say? Yeah. कि we have to treat him like how others treat him on set, which is his profession, which I have to respect. कि वो मेरा भाई नहीं है सेट पे, वो भाई घर पे है. सेट पे वो सुपरस्टार है, एक्टर है, मैं डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ. मुझे उसके साथ वैसे रहना है जैसे कि दुनिया रहती है. थोड़े से लिबर्टीज है मेरे पास कि मैं जाके अप्रोच करके थोड़ा सा कर सकता हूँ. बट ऐसा नहीं है कि उसके जो डिमांड्स हैं, जो चीज़ें उसको चाहिए, जो टाइम पे चाहिए, जो दूसरे देते हैं, जो उसकी डिमांड्स हैं, वो I can get away with without fulfilling, and that's not even right. So there is where we have this nice working relationship. He's done almost 6 films with him. Yeah. I've done 3-4 films with him, but we maintain that. We feel that we have to keep that integrity and that professionalism going. No, that's a good thing, of course. That's, लोगों को ऐसा लगता है कि यार नहीं yeah, ऐसा that's नहीं, what नहीं. bye. And in every way, in that, in terms of the commercials also. So it's when he's working with us, whatever is his market price at that time is what we both achieve and give it to him. Not कि अच्छा भाई है, No way. तो यार हमको Seriously? 50. हाँ. We have always given him the highest price that he's ever got for all his films. So when Dabangg 1 happened, whatever was his price, it happened post the film. He got that price. When Dabangg 2 happened, he had not achieved that price from anybody else. That price was as a family we had, and that's fair, na? He's bringing so much to the table that he deserves that. Yeah, sure. So it's not as though it's going from my pocket, na? मेरे pocket से नहीं जा रहा है. He is a superstar. There's money involved. He's getting that. That's how his price also increased. Okay, that's wonderful. Yeah. मजा आता It's है. not, yeah, see, you have to respect people's value. Abhi recently, I was doing a show and I had my dad come and give an interview. Everybody would have thought कि यार अरे बाप का इंटरव्यू है तो ठीक है बेटे ने कर लिया होगा. मुझे मालूम है जब मेरे फादर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो दूसरे लोग उनको they pay a financial, there's a financial consideration. So when I am looking at it as a commercial thing, I should also consider that he needs to be paid. So a check goes to my father from me, from my production. Nice. Very nice. Yeah, you remove time, you've given a valuable experience and you've spoken to me. It is not for free. There is a value. So he respects me for that also. Very nice. So that's how we are as a family. We don't, take each other for granted. लोग और चाहे कुछ भी लगे, reality ये है. Reality ये है. मजा आता है OTT करके, बिग बॉस करके. एक सच बात बताओगे, फोन सीरियसली अलाउड नहीं होते? फोन अंदर अलाउड नहीं. सीरियसली? नहीं. ये बेचारे कैसे रहते हैं इतना टाइम अंदर बिना फोन? रहते हैं अभी सबको अपना करना होता है. But how's the experience of hosting So the we thing? had a wonderful time. And that segment was a slightly different from the regular segment. Yeah. And शायद शुरू किया था with then testing के 3 episodes करके देख लेते हैं कि ये क्योंकि it's a big show. Well, whether the two of us with our chemistry and whatever will pull it off.
But fortunately, after the first 2-3 episodes only, they realized that the whole thing is working, and we were given 12 episodes. Very nice. And then we were there in the finale also. So that's what that worked for us. But are you guys not per se to Big Boss, I'm asking that. Are you guys in favor of OTT? लगता है, is it a good thing? Like, is it a good medium? Do you think it will, or is it harming films in any way? I think So, Mike. my personal agenda towards OTT is that there should be a censor towards it. Because it's like social media. You know, it's when you have children, you kind of realize it. Now you've got your phones, which are accessible, your iPads, they're open to the world, and you've got no control over it. And as a parent, how much can you monitor it? Of course. So there is so much that social media, OTT can teach us, and you know, the value of the world. But then there's so much that can spoil your kids who can get highly influenced. Yeah, sure. And the tempting things are always much easier, brighter to watch and to see. So I just feel that how we have, because see, I tell you, I'm a person who believes in theaters, who believes in cinemas. When you go to a theater, you have a stranger sitting with you. Chill. You automatically keep your respect. Yeah. You automatically keep decorum. You're sitting with somebody else's sister, somebody else's friend, somebody else's, you know, family, and you behave yourself. वो घर पे वो बात नहीं है. घर पे आप चड्डी पहन के, रिमोट हाथ में लेके, आपको जो भी करना आप कर लो, आप कहाँ से भी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो. So theatre cinemas had got us a discipline in our lives. There were A certificates, X-rated films. They were monitored. And so when and there is seriousness to watching a film. Otherwise, for any artist, like I said, let's say आप एक कुक है, उसने खाना बनाया आपके लिए. अब आप खाना खा रहे हो, फिर आप उठ गए, फ़ोन पे गए, वो वेट कर रहा है कि आपको खाना कैसा लगे. फिर आपने किसी और से बात कर लिया, फिर आप वापस खाना खाए, फिर उसको लगे यार मैंने खाना बनाया, तुम बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो. Cinema doesn't allow you to get distracted. You've got a specific time it starts, you've got a specific time it gets over. The film will only run for that time, so you have to respect it and watch it. The advantage or disadvantage of OTT is that कभी भी बंद कर दिया, कभी भी रिवाइंड कर लिया, कभी भी वापस देख लिया, फिर एक दिन बाद देखा, 2 दिन बाद देखा. तो जिस आदमी ने वो मेहनत से फिल्म बनाई है, आप उसको लेजरली अपने पेस से देख रहे हो. तो थोड़ा सा जो क्रिएटिव आदमी है उसको कोई चीज़ आप समझे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज है. अब एडवांटेज ये है कि आप अपनी मर्जी से देखो, रिमाइंड करो, पॉज करो, फ़ोन पे लग जाओ, अपने बच्चों को अटेंड करो, स्कूल छोड़ के चले आओ, फिर वापस से देख लो, वो एडवांटेज है. बट फॉर अ क्रिएटिव पर्सन, ही डजंट वांट यू टू सी द फिल्म लाइक दैट. He wants to see the film in one go. He wants you to respect his work. You know what I mean? Yeah. So that is there. But it's here to stay. I believe that no matter what, it's going to get bigger and better. And it is going to be there because home entertainment is going to be everything. No, I just believe that people work hard in what they do. And you can see it in intervals according to your convenience. But respect people's work. And and see, you know, then we have our critics who can who have something to say about everything. लेते हो seriously लेते हो आप लोग critics को नहीं? जी. Seriously लेते हो critics को आप लोग? It should be taken. Why not? I believe that if somebody's got a point of view, however ridiculous it may be, होगा दिमाग में कुछ उनके personal life में चल रहा होगा. You know, अलग लोगों के अलग experiences होते हैं. And if you take it in the right spirit, okay. Some people get offensive. सबका टेस्ट नहीं होता ना. लाइक से अभी आप कभी बुफे खाएं, आप लंबा सा स्प्रेड होता है बुफे का, तो आप जाते हो एक जगह जाते हो, आप नहीं यार ये नहीं, ये पसंद है. बट ज़रूरी है कि दूसरा वाला एग्जैक्टली आपको फॉलो करेगा. वो पता चला जो आपने छोड़ दिया उसी को 3 बार ले रहा है, उसको वो पसंद है, आपको कुछ और पसंद है. तो आप इट्स लाइक, तो सिनेमा इज ऑल्सो लाइक अ बुफे. It's not possible that you like everything, na? Even if you're a critic, you're not going to consume everything. You may not like something. Now that stays in the back of your mind कि मुझे science fiction पसंद नहीं है. या अब बट आप क्रिटिक एक मैगजीन के हो, आपको हर पिक्चर को
को रिव्यू करना है. हमने कोई स्पेशलाइज नहीं किया है कि साइंस फिक्शन के लिए ये क्रिटिक है. एक होता है कि यार आप इंडियन फूड के कनॉसियर हैं तो आप इंडियन फूड को जज करो, आप जापानीज फूड के कनॉसियर हैं आप उसको जज करो. यहाँ तो कुछ नहीं है ना, यहाँ तो जो खाना जज करो. तो मुझे पसंद ही नहीं है कोई खाना तो मैं क्या उसको जज करूँगा. तो वी डोंट स्पेशलाइज इन थिंग्स, वी जनरलाइज इन थिंग्स. So a critic also is not specialized in drama necessarily, or not specialized in science fiction or a romantic film, because those have a different sense of judging, right? You cannot judge. So the only way you can judge. Actually, we go to see. We give. Critics, Mike. Yeah. we give critics बहुत मायने हैं. हम critics को बहुत मायने देते हैं. But the actual critics is this public. Yes. That is the public come who watch the film. They have the right. They decide the film. They have the right to decide that they have given you their time, their money, to like, dislike, and it's the makers to learn from that. Sure. Because somebody told my father once that जो आपके बेटे ने फिल्म बनाई वो अच्छी थी लेकिन वो चली नहीं, इसलिए अगर मेरे बेटे ने अच्छी फिल्म बनाई होती तो चलती. So there is nothing called a good film or a bad film. A hit film is a good film and a flop film is a bad film. Because the majority has seen it, it's a hit film. It's called show business. आप ये सब दुकानें देख रहे हैं, ये सब अगर आप कोई दुकानों में बहुत अच्छे कपड़े हैं लेकिन उनमें कोई खरीदने वाला नहीं है तो भाई वो अच्छी दुकान नहीं है. समझ गया. वो सिंपल है. So where the sales are, I think it's a commercial business. Yeah. So commercial, it's called a commercial art, and the word commercial comes before the art. When they say it's a commercial art, commercial is before the art, right? True. So that's what it is. Okay? Film success is got to do with the financial investment in it. If a film is made for 100 crores and it does a business of 200 crores, it's a hit film because the valuation of the film is 100 and it's made 200. A film is made at 100 crores and it does 50 crores, it's a flop film. Now, I would differ with whatever he says. It could be a good or a bad film. Doesn't matter. But it will be a flop film. It can still be a good film, but it will be a flop film. Why? Because it's not covered the money. Okay. Because good is a matter of liking. Like I liked it, it didn't do well, doesn't matter. Okay. So, but from the commercial point of view, from a business point of view, like a distributor who buys the film will say, "वो तो बुरी picture है, क्योंकि वो चली नहीं." But वो उसकी भी एक reality. अंदर का producer बोल रहा है. because he's never made flop films. No, that's why he says that. No, but you're right. दो You're flop right. film बना दो. नहीं, you're right. नहीं चले, नहीं जो पिक्चर नहीं चलती है, एक जनरलाइज है कि वो अच्छी नहीं थी, ना तो अगर अच्छी होती तो लोग पसंद करते हैं. एंड ये भी फैक्ट है कि वेरी क्या बोलते हैं, बहुत ही हम्बल स्टार्ट से पिक्चर है बहुत बड़ा बिजनेस करती है. कई बार हमने देखा है कि एक छोटी फिल्म वो 200 थिएटरों में लगी है, फिर दूसरे दिन 300 हो जाता है, संडे तक 500 हो जाता है, नेक्स्ट वीक 1000 हो जाता है. तो ज़रूरी नहीं है, तो वो पिक्चर अगर अच्छी है तो वो अपने आप उसका वेव और उसका पेस पकड़ लेती है. एंड सिमिलरली यू कैन हैव अ 5000 स्क्रीन रिलीज एंड पता चला पहले दिन के बाद ही डाउन, और पता चला मंडे को 1000 स्क्रीन भी नहीं है. समझ गया. Okay, that's a good way to look at it. So we'll do the 5-minute Q&A with the audience. But उससे पहले, there's one thing. You ask anyone over here, right, what Dubai is to them, they'll all have a different answer. One thing they'll have in common is its home. What is it? How is Dubai from your eyes? What is it? कैसा है? How is it to you guys? It's home away from home. Yeah. Seriously. You know, पहले, let me be very honest, अगर 10 साल 15 साल पहले अगर मुझसे किसी ने पूछा होता कि यार अगर इंडिया के बाहर, मुंबई के बाहर, लेट्स से अगर तुमको कहीं रहना है तो तुम कहाँ रहना चाहोगे, तो मैं बोलता था यार लंदन में रहना चाहूँगा यार. आई वुड लव टू स्टे इन लंदन. दैट वाज बिकॉज मे बी चाइल्डहुड की कोई ट्रिप्स वगैरह और जो जगहें देखी हैं या जैसा है तो लगा वहाँ. बट सिंस द टाइम आई बीन कमिंग टू दुबई एंड आई मस्ट वेरी honestly say this is home away from home. It's got everything that one would want to be making a house in. And inshallah, I don't see that it can happen, that I might probably have a house here and start living as much here. कल से फोन आने शुरू हो जाएंगे आपको. रियल एस्टेट यहाँ पे पूछो सबको कितने आते हैं आप लोग को. But ये नंबर fact दे है. देंगे हम.
Dubai has got everything. It's everything. सब कुछ है दुबई में. There's nothing that I can say यार ये जगह में ये नहीं है. It's got peace of mind. It's got peace of mind for your Yeah. family. It's got the safety, the peace of mind that you Living, security, every facility, modern, you name it. It's got everything, and it's like a melting pot. Of the world. So you're not like, it's beautiful. Wonderful. We love to hear that. So can we get the mic for? So आप इनके हवाले हो. हाँ जी. That. Hi, can you hear me? It's all working. Yeah, what is Can the you hear question? me? Somebody wants to ask a question. Yeah. The audience. Just a quick Q&A. Yes. It's all Is my working. mic working? My mic can is not hear you. working. You can hear me? Yeah. You can come a little ahead. हाँ? कह रही हूँ आपको शादी मुबारक. हाँ मैंने it's बोला okay, thank the you. mic's here. बोला. Okay, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि I'm loving your son Arhan on Instagram. I Little louder. love the way he interacts with the paparazzis. Tell me, what do you think about his interaction? Because I have hardly seen you interacting with the paps like your son. Yeah, so I think I have learned now recently to be a little more affable towards them. I was a little shy. So I used to ठीक है, if I would see paps and all, I used to give them my pictures and all that stuff and post for them. But thoda sa, I'm a little conscious about it. So whether it was at the airport or getting out of a restaurant. But I'm quite pleasantly surprised the way my son has understood that he unfortunately cannot avoid this scenario in his life. Okay, bhai, my parents or my family comes from a space where अगर मैं बहुत ज़्यादा बचूंगा तो it will be reflected in a different way. तो embrace the scenario. तो he has actually now embraced it कि ठीक है अभी मैं जहाँ जाऊँगा ये आएंगे, ये इनको मना नहीं कर सकते, and plus मुझे यहीं रहना है. So in that sense he has become more affable towards them, and I also see that they interact very well. They are very fond of him, and I like that. I think he's doing a good job where that is concerned. बहुत मजा आता है उसको जी, देख जी, के. जी. उसको जरूर बताइएगा कि हमारे जी. बड़े फैंस हैं वो यहाँ है पे इस वक्त दुबई में है मेरे साथ. हाँ हमने देखा इंस्टाग्राम जी. पे बता देते हैं. Assalamu alaikum. हाँ जी, कहाँ हैं आप? हाँ जी. Sir, my name is Salman. I am from Pakistan. I am big fan of your family. Thank you. And मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि आपके इंटरव्यूज़ वगैरह में भी सुना है कि आपने सिंगिंग भी सीखी है. आपके घर में एक उस्ताद जी आते होते थे आपको सिंगिंग सिखाने के लिए. सिंगिंग तो आप कुछ गुनगुना के सुना दें प्लीज़. थोड़ा सा कोई भी सॉन्ग. अरे यार, गाना मेरे फादर ने मेरी धज्जियाँ उड़ा दी कि मेरा बेटा क्रिकेटर बनना चाह रहा था, सिंगर बनना चाह रहा था. मैंने जाके पूछा कि डैड मुझे क्रिकेटर बनना चाहिए या सिंगर. इसे नहीं बेटा क्रिकेटर बनना चाहिए. मैंने बोला क्यों? इसे मैंने आपने मुझे क्रिकेट खेलते हुए देखा, इसे नहीं मैंने आपको गाते हुए सुना है. तो अभी मेरे को और क्यों अभी एम्बैरेस कर रहे हो? हाँ चलिए दो लफ्ज अपने दबंग का ही गा लेता हूँ. हाँ ये हुई बात. ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन. आपके लिए गाया मैंने. हाँ ओके ये भाई का एक क्वेश्चन. तो माइक पहुंचा नहीं. बहुत बहुत शुक्रिया. ये कह रहे हैं शादी मुबारक हो. मैं उनको मुबारकबाद का रिसीव कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ ताकि आपको सुनाई दे. नेक्स्ट. अरबाज भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि दबंग 4 कब आ रही? मेरा क्वेश्चन है कि आप बताओ कब आना चाहिए. नेक्स्ट ईयर ले आओ. हम जवान इस पे- जवान का रिकॉर्ड तोड़ दो. हम इस पे काम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, समझ लो. हाँ सलमान भाई को सलाम बोलना मेरा. थैंक यू. अब किसने बोला है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जरूर बोलूंगा. बोलूंगा दुबई से एक सलाम. दुबई में किसी जगह में दुबई 500 लोगों में से किसी एक ने बोला जाके सलाम बोलो. चलो. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो. ओह या थैंक यू. श्योर. पहले तो अरबाज भाई आपको बहुत बहुत शादी मुबारक हो. थैंक यू. और मैं आपकी फैमिली को बहुत फॉलो करता हूँ. मेरा क्वेश्चन है सोहेल भाई से. जी. सोहेल भाई आपकी फिटनेस का राज क्या है, सीक्रेट क्या है? कोई एक आध टिप्स देंगे? बहुत फिटनेस आपकी का
फिटनेस का जी सर। मेरे 2 बच्चे हैं। तो सर एक दो टिप्स हमें भी दे दीजिए मतलब सर। जिसके 8 बच्चे उसका फिटनेस लेवल क्या होना चाहिए? सोचो, है इधर किसी के 8 बच्चे? एक 20 साल का है और एक 10 साल का है, तो दोनों के पीछे जो भागना पड़ता है वो अच्छा, फिट मैं नहीं कुछ और ही समझा। माशाल्लाह सोहेल भाई आपकी फिटनेस बहुत ज़बरदस्त है, मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, भागने के ऊपर फिटनेस है इनकी। मुझे लगा कुछ और कहना चाह रहा है मेरा भाई। Chalo, I think we've covered quite a few things here today. Yeah, it went very well. You Thank have you been very very much. gracious. we have I hope to bored go to somewhere नहीं हुए. I think No, no, lovely unfortunately crowd, we yeah. would have loved to Hello. stay longer, but unfortunately we got some prior commitments. बहुत मजा आया. Thank you very much for being patient and बहुत मजा आया. उनका एक ले लो. अच्छा, वो हाँ. उनका यार इनको दो यार. उनका सवाल जब तक नहीं आएगा उनके कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी. अरबाज भाई Just one question. हाँ. मेरा अरे माइक तो रखो अपने यहाँ पर. माइक लेके यहाँ रख रहे हो, बात कर रहे हो. यहाँ रखो माइक. हाँ, भाई मेरा मैसेज है ना सलमान खान के लिए भाई। बोलिए बोलिए. ठीक है, हरियाणा से हूँ मैं और मतलब ऐसा ही है, कोई बचपना का सही सवाल है मेरा भाई, एक केयरिंग का सा है। भाई को मैंने कई बार देखा शो में रहता है ना जैसे, तो उनके थोड़ी खांसी होती रहती है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि उसका थोड़ा ख्याल रखें। और दूसरा जैसे उनकी जो सेहत है ना, मतलब उसको फिट रखें, क्योंकि हमने देखा लोग 80-80 साल की उम्र में भी मतलब अपनी उसको फिट रखें, क्योंकि हम लोग उससे बहुत प्यार करते हैं दूसरे लोगों की तरह, तो हम उसको चाहते हैं कि वो किसी से कम ना रहें और आगे रहें हर चीज़ में, और वो मेंटली भी बहुत ही मजबूत है उस चीज़ से। आते हम ठीक है, बिल्कुल तो भाई एक अगर फोटो मिल जाए, मैंने नाइट ड्यूटी करी है भाई यहीं पे, एक आपसे रिक्वेस्ट अगर मिल जाए तो भाई। ठीक है, बोल देंगे, कन्वे हो जाएगा. ठीक है. So I think we are good. Thank you Arbaaz Thank bhai, you. Sohail bhai for Thank you, making everyone. time for Thank you. Timeout. It was lovely to speak with you. And थैंक यू सो मच। give me the get. Arbaaz Sohail Khan. A big thank you to our supporting partners, Grandiose Supermarket, Al Arab Tents, Al Kotha Contracting, Noble Metal Coating, Magnus Zenith, VTEL TV, NKN Media, Isma Entertainment, and Moby Wens. Venue partner BurJuman, print partner Khalij Times, magazine partner Magzoid Magazine, radio partner Vibe FM 105.4. And the event was brought to you by Fox Media and Entertainment.